Good morning, everyone who is watching the video via the link or who is clicking the window and watching the video. First of all, let me introduce myself, Archana Singh, Assistant Professor in Journalism and Mass Communication Department. And on the behalf of IIMT Group of Colleges, I will be delivering a short, you can say a concise topic related with advertising. Actually, it's a very contemporary topic that is really advertising is an art or it's something else or it's something scientifically proven word like so proceeding to my further ppt, I will be going you through the phases of advertising, what actually advertising are made up of, what actually advertisement is. So proceeding ahead with my first presentation, that advertising in art, and these companies know it, right? If you are watching the ad of Fevicol, if you are watching the ad of Amul butter, you may realize that it's something which is somehow diplomatic, somehow filled with emotion, somehow filled with the sentiments of the people. So yeah, we can say that actually these company really knows that what people demand. And somehow art actually initiates life, advertising initiates art. So yeah, it's somehow correlated that we are relying on the art and art is relying on us. Us, thus we are audience. So second slide, life size idea. Idea is something which comes like a pop-up. Something like whatever we are thinking, whatever we are feeling, it's just come in our hand and we just in it out, note it out down. We just thinking about it. So this is what I can call as it's a life size idea, or you can say that it's a huge idea. Idea the advertiser selects for communicating the brand strategic message in a creative way. It means that advertisers are those people who are circulating, who are creating the ad into a very strategic and also in a very creative way, right? So it's something which is like connecting with the sentiments, something in it connecting with the emotions of the people, right? And it's link between an ad plan and creative execution. If I talk about life size idea, it clearly means that I'm explaining the huge sentiments from where the idea come to prepare the whole life ceiling of the ad. So yeah, there is a link between an ad plan and creative execution. As in, if I tell you about Surf Excel ad, that daag अच्छे हैं, so it clearly means that there is a whenever you are watching the ad or whenever you are listening the ad via podcast or as a radio, wherever you're watching this ad on audio mode, you realize that it's the sentiment and it's the conversation between two women who are sharing their household chores. It's the sentiment where two boys are playing and they are untidy. They are not like something. They are not very neat. They are expressing that yeah, I can do it, but just give me 2 minutes, right? So there is an emotional connect which people right want nowadays, right? Creative concept to execute advertising strategy. If you are planning any ad to generate, to create, to think, to execute, it's a very creative concept. Advertising strategy, it's not a very 2 minute Maggie task that you are thinking and you are preparing the ad. It's nothing like that. It's a very creative concept, right? Whenever you are, the first thing while I'm teaching the students, I used to tell them the key to success in the field of media is just observation. You need to observe what people are thinking nowadays, how people are dealing with themselves, why people are feeling low, why people are feeling depressed. So they needed emotional sentiments. That's why they brought Snapchat has brought AI to connect with you. That's why they brought something like robotic elements to connect with you because nowadays we are all very lonely due to our 9 to 12 hours job, right? So there we can say that in the if you want to survive in this planet, in this whole planet, you need to have a very creative concept, right?
So how does idea came from? Those students who are watching this video and anyone of you who are watching the video, there is something like people are thinking that like ये idea कहाँ से आया यार? It's something us we are talking about. Like आप रक्षाबंधन देखते हैं, they are the siblings are playing with each other, they are tying the thread, है ना? Tying the divinity thread, they are playing with laddu. If you are watching the ad in Karwa Chauth, you may realize that couples are gifting each other something. So it's not something which came from the galaxy to galaxy. It's something which came from your side by side. It's just came from your family. It's just came from the person who was sitting next to you. It's not a very huge task. It's just an observation which you are thinking. So yeah, idea generation depends upon two ways. It's analytical and creative. If I talk about analytical thing, it's logic, unique answer and conversive. If I talk about creative, it's imagination, many possible answers, and it's very divergent. If I say that my idea is very analytical, it means that you are believing on something facts, you are believing on the figures, you are believing on the direct response and something unique, right? If I talk about creative, the creative mindset of ideas, you definitely understand that it should be very imaginative, should be filled with multiple possible answers, should be divergent. It clearly means that sometime idea would depend upon fact and sometime idea depend upon creative elements. If I think about like what does it divergent thinking? I have given the picture over here. Divergent thinking. It means that if you are watching like if you're watching the ad of Maggie, like Bharat ka taste, Bharat ka swad. It means that India is the country, it is filled with diversification. It's filled with multiple peoples, multiple thought, multiple ideas. Like we are a secular country, right? So we are having multiple thoughts. Some think in a very straight way, some people think in a vertical way, some think into horizontal way. So we can say that it's a very divergent thought and divergent idea generation thoughts. So idea is not in the outside of the human index. It's not outside the universe. Idea is just sitting next to you. You just need and collect that idea and just pen it down. Whatever you want to pen it. Whenever you're watching two people are fighting together and what on what topic they are fighting. If the couple are discussing something in the mall, then you definitely start observing that what actually they are discussing, right? Somehow, if you want to like if you want to shop something and you have not that particular amount, then how could you shop something, right? So it's something analytical and it's creative. So facts also required, creative thought also required, unique answers also required, but including multiple possible answers are also required. It is convergent, it means one thought, and divergent means multiple thoughts. It's not decided, there is nothing a benchmark like that, that only one thought involved, only one the way involved. It's like multiple thought, multiple conversion, and multiple divergent thoughts involved. Proceeding ahead on the tips on creating creative ads. How you are like back of the slide, I am teaching you like how to plan the idea, how the idea should came like a pop up in your mind. So here and the tips I will be suggesting you. Be a constant learner, right? It's a very important thing as a human being, as a student, as a professor, as a normal human being. That if you are a constant learner, then only you can get a creative mindset. Then only you can get a creative thoughts or whatever you are using, right? Second point, indulge with your product. Whatever thing you are using, like I am feeling very hungry and I have no time to make something into a very long procedure, then what should I use? I definitely tear out the packet of Maggie, then I'll cook it in 2 minutes, not possibly on 2 minutes, it will take a long time. But yeah, why I'm using Maggie? Because it's very quick. Why I'm using Vanish? Because there is no stain. Why I am using um, Cadbury? Because it's the time for celebration.
So you want to indulge with your product, whatever product you are using, you need to think before it why actually you are using it, what's the idea behind it, why people are made this, why people are suggesting you to purchase this. Yeah. And third point is that understand your audience, which is very necessary. Like audience are something, because in the industry of media, you're not a person who is involved only up to yourself. People are watching you, people are practicing your thoughts, people are believing on you. So you need to understand your audience, what actually they demand, because they are God for your side. Whatever you will be preparing for them. Whatever you are purchasing for them. Whatever you are trial and testing, you are trialing and testing for them. And the audience is the only person who will be giving you the positive, negative feedback, right? And brainstorm regularly. If you're watching something, like if I used to tell you about the ad of a coconut oil, then in summer they had prepared a oil which is like something cool relevant. And if you are watching the same coconut ad in winters, they clearly say that it's a hot chumpy. So it's something related. You need to build multiple ideas, right? You know the rules, what are the limits to prepare the ad? What are the regulations which you want to prepare the ad? What are the writing skills that you need to prepare, right? Base creative on the strategy. It's something not like you are preparing the ad into a very creative favor mode, but creativity also required the good strategy, right? Learn to work without USPs. It's something like people are multiple times they are asking you that what are your USP? And before 6 months, your USP will be different, and after 6 months, your USP will automatically begin different thoughts, right? So it's not benchmark that your USP should be staked on that particular point, but yeah, you learn to work without USP. You need to cross the borders, right? Arouse audience interest. You need, there is something different thought in ad that you're not only preparing for the audience, somehow you need to build the taste for the audience. कई बार आपको उनके लिए taste बनाना पड़ता है. It's not always necessary that they will be practicing your taste. It's also like आप उनके लिए taste बनाएंगे तो वो adapt करेंगे. आप उनके लिए कुछ करेंगे, then they will find adaptive for you. Like break free from stereotypes. A biggest example is Fair and Lovely and Fair and Handsome. पिछले कई साल पहले, if you're watching the ad of Fair and Lovely, you felt realize that अगर कोई लड़की गोरी है, कोई लड़की अच्छी है, तो वो फेयर एंड लवली लगाने से ही होगा. इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? यू आर नॉट एबल, you are not in that particular position to explain the stereotypical thought. You are here to break free stereotypical thought. It's not decided that if you are using fair and handsome, then you are only getting handsome, right? And don't overpromise, right? After like applying this cream, you will the acne will be just gone in 5 seconds. Don't overpromise it. Give a promise which would be genuine, which would be reliable, where people will rely on you, right? Base creativity on strategy. I already told you before that base creativity, which is actually on your strategy. It means that it's a very clear projection that there is an ad that tells that my daddy is the strongest. In the second ad is today is the Father's Day, resolve to keep daddy picture close to your heart. It's something which is much connected, right? The kid who is using the oil, because आप अगर यहाँ पे ये picture देखेंगे, here's a picture where you will find that it's a very cute girl, not up to like she's up to like 3 to 4 years of her age, and it's the period where the child has developed its pillar as the point जहाँ पर बच्चा अपनी major growth पर आता है ना? वहाँ पर this oil is persuading that yeah, while eating this oil, while preparing the food with this oil, you will feel more stronger. And who will be saying it? My daddy. My daddy will tell me that I'm the strongest. So this is something very emotionally strategically made. And yeah, the point for don't overpromise that dermatage, look years younger in a minute. Reduce the appearance of wrinkle, no details of painful infection, blah blah blah. Yeah.
Like how someone look years younger in a minute? How come it possible? This is the biggest example of overpromise. Like happy dent white, chewing gum for sparkling teeth. पूरी जगह अंधेरा है, but if you are eating happy dent, you will be glowing. Like how come it possible? I haven't tried this. Like I don't want to actually try this because it's overpromising it, right? Tips on creating creative ads. It's a much important and much indulging fact that there is a thing which we actually come up upon, that whatever you are creating, reinforce your identity. ऐसा मत सोचिए, if a girl is writing the ad, right, तो वो अपने हिसाब से लिखेगी. No, you are writing, you are not writing for a gender to a gender, right? You are writing for your audience. It's something not like that. You are persuading the thoughts. It's something like you are writing for everyone, right? कोई भी क्लिक कर सकता है उस समय, अगर कोई भी उस एड को किसी भी समय सुन रहा है या किसी भी वक्त देख रहा है, दे फील कनेक्टेड, राइट? Emphasize benefits, not features. It's a very important term, right? You need to emphasize the benefits of the product, not the feature of the product, right? You don't need to say that this has this. No. While eating calcium, your bones will be like more powerful. If you are, you don't need to say that after your bone become powerful you will become this. No, it's just emphasize on benefits, not on the feature of the product. Use numbers with caution. If the ad is somehow analytical, if ad has numbers, then you need to write that ad into a very cautious way. Like if you're watching the ad of Colgate and Pepsodent, they always say 99.8% or 9%, 1%. वो फिर भी रखते हैं. It's just because they are cautioned with their numbers. And most important, follow the KISS rule, which means that keep it short and simple. Because in nowadays, if I talk about the audience, they have not enough time. They are not up to that. They feel that something which will be what they're feeling about. It's something like they are feeling on the things like it should be whatever you are delivering. It should be very keep it short and simple. It's a very justified answer that whatever ad is delivering. कुछ भी अगर आप देख रहे हैं तो उस चीज़ को ध्यान रखिए, उस चीज़ को आपको ओवर इंडल्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. You just need it, keep it very short, keep it very simple. And yeah, keep the communication current. ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद अपने प्रोडक्ट को दोबारा लॉन्च करें. नो, keep the communication into a very rapid flow. Keep the content, keep the product, display the product into a very current way. Not something कि 5 महीने ऐड दिखा है, 5 महीने बाद आप गायब है. ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा. So you need to communicate with the help of advertisement into a very current way. Stay away from the obvious thought, right? Stay away from the obvious like इसके बाद तो यही होगा, अगर हम ये शैम्पू यूज करेंगे तो हमारे बाल सिल्की होंगे. नहीं, अगर आप ये शैम्पू यूज करेंगे तो आपको केराटिन ट्रीटमेंट भी मिलेगा. सो जस्ट डोंट always use or don't always write something which is very obvious for the audience. Write something which is very not known for your audience. Creative execution elements, it's a foremost important elements that message actually appeal. It has not been something like it's just a very gender thought that message द एड लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, वो एड है. तो आप उसको देखेंगे तो कुछ एड ऐसी होती हैं दैट इट इज वेरी अपीलिंग टू यू. लाइक मैं इसको ट्राई करूंगी यार, लेट्स ट्राई ये कैसा होता है. लाइक अब आप लोग बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स देखते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे देखते हैं दैट दे आर फॉर द कर्वी गर्ल. जो कोई कर्वी गर्ल होगी वो उस चीज़ को डेफिनेटली अप्रोच करेगी बिकॉज दे फाउंड समथिंग विच इज अपीलिंग टू हर, राइट? मैसेज फॉर्मेट्स, कोई भी मैसेज अगर आप तैयार करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि वो फॉर्मेट्स कैसे हैं.
ना तो आप उसको ज्यादा लंबा खींचिए, ना तो आप उसको छोटा रखिए। इट्स जस्ट लाइक, because in advertisement there are multiple different strategies to be tried for. कई बार आप देखते होंगे टेक्स्ट की भी जरूरत नहीं होती, साइलेंट एड्स आते हैं. So these are different message formats for the execution element. And the other thing is message tone. It's like the human behavioral thought. कोई भी ऐड अगर आपके सामने आती है तो आपको याद रखना है कि वो टोन कैसा है, आप उस टोन पे किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं. वो टोन अग्रेसिव है, वो टोन रशफुल है, वो टोन किस तरीके की है. लाइक अग्रेसिव है तो वो हमें कह रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कल, है ना. वो आपको टोन को फॉलो करना है. और जब इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, मैसेज अपील, मैसेज फॉर्मेट, मैसेज टोन, मैसेज जो, तो सॉरी, तब इन तीन चीज़ों को मिलाकर आपका जो एडवर्टीजमेंट होता है वो एक स्ट्रक्चर को फॉर्मेट करता है, जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव एग्जीक्यूशन एलिमेंट्स. नाउ द मैसेज फॉर्मेट्स. डेमोन्स्ट्रेशन, कोई भी ऐड आप देखेंगे उसका डेमोन्स्ट्रेशन बहुत बराबर तरीके से होना चाहिए. कोई भी न्यूज़ अगर आप ऐड के तौर पे डालते हैं, दैट शुड बी फैक्चुअल, इट शुड बी नॉट ओवर बेस्ड. कंपैरिजन, कंपैरिजन भी अगर आप करते हैं तो उसको कायदे से करेंगे, या आप दूसरे प्रोडक्ट का ऐड नहीं दिखा सकते, ना ही उसका नाम दिखा सकते हैं. आप प्रॉब्लम नहीं दिखाएंगे, आप उसका सोल्यूशन दिखाएंगे एडवर्टीजमेंट में. ठीक है, प्रॉब्लम को कैसे घटाया जाए ये दिखाएंगे, ना कि प्रॉब्लम दिखाएंगे. कोई भी ऐड है उसको आप ड्रामा फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं, जहाँ पर करीना कपूर जैसे आप देखते हैं, या आप देखेंगे ऐश्वर्या राय है, वो किसी ज्वेलरी का ऐड दे रही है, तो देयर इज अ ड्रामा, समथिंग कॉन्सेप्चुलाइज, बहुत प्रिपेयर किया जाता है, उसको हम कहते हैं ड्रामा फॉर्मेट. फिर आता है टीजर्स. छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, अब आप वो क्लिक करते हैं, इन जस्ट 3 minutes दे आर जस्ट गॉन, इन 3 seconds दे आर जस्ट गॉन. सो दीज आर दी टीजर्स, राइट. स्लाइस ऑफ लाइफ, लाइक कुछ आपके लाइफ के कुछ हिस्से से कुछ जुड़ी हुई एड. स्पोक्स पर्सन एंड एंडोर्सर, वो एडवर्टीजमेंट जहाँ पर आपको एक एम्बेसडर की ज़रूरत है. लाइक अगर अनुष्का शर्मा है तो वो हेड एंड शोल्डर की ऐड देंगी, है ना, तो वो दीज आर द एंडोर्सर. पर्सनालिटी सिंबल, अगर आप देखते हैं डाबर आमला, तो डाबर आमला से हमारे दिमाग में सबसे पहले करीना कपूर ही आती है. दीज आर द पर्सनालिटी सिंबल एड. प्रोडक्ट एज अ स्टार, कई बार हम ऐसी एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं जहाँ पे उस प्रोडक्ट से ऊपर कोई और है ही नहीं, बिकॉज स्टार इज अ वर्ल्ड विच मीन्स दैट समथिंग वेरी स्पार्कलिंग, समथिंग विच इज वेरी शाइनी. सो वी ऑलवेज रिलेट दैट प्रोडक्ट एज अ स्टार. मिंटेड, यानी बहुत डिटेल्ड पुराने फॉर्म को यूज करना एडवर्टीजमेंट में. Testimonial, it's very common thing, the review of the product which you have, which the person have already used. Lifestyle, like the right now this ad is came into very multiple rapid order, that what actually lifestyle is. Lifestyle advertisement is something which we have already been adapted, like Ozivia, a plant based product. अगर आप इसको खाएंगे तो आपके लाइफ में विटामिन सप्लीमेंट्स को आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, आप उसको अपने लाइफस्टाइल के तौर पे अपना लेते हैं. अगर च्यवनप्राश की ऐड देखिए, विंटर में आपका एक लाइफस्टाइल होता है टू ईट द च्यवनप्राश. These are the ad formats which you are using in the form of lifestyle. Musical ad, like something which you are relating with the music, like कई बार आप गाने सुन के ऐड को जज कर लेते हैं, कई बार ऐसा कुछ ऐड है जहाँ से उस टोन से आप अपनी ऐड को डिस्क्राइब कर लीजिए. दीज आर म्यूजिकल ऐड. इमेज से, लाइक पार्ले जी की अगर वो बच्चे की इमेज आपके सामने आए तो आप गेस कर लेंगे विच प्रोडक्ट, ये कौन सी बिस्किट है, कौन सी कुकीज है. दीज आर इमेज. साइंटिफिक एविडेंस, लाइक ये वो एड है जहाँ पर साइंटिफिकली आप उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं जो साइंटिफिकली यूज़ है. Important thing right now is demonstration, right? Demonstration, which is a very most important. Product in use, use of product before and after, side by side. It's a very um, creative example, you can say that. कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं तो आप उसको यूज़ करता दिखाइए, तब उसका इम्पैक्ट जो है आपकी ऑडियंस पे ज़्यादा पड़ेगा, ना कि आपने उसका एज अ प्रोडक्ट आपके स्क्रीन के एकदम सामने रख दिया और उसका इम्पैक्ट है नहीं. आप उसको खाते हुए दिखाइए, है ना, आप उसको यूज़ करता दिखाइए. अगर आप कोई मेडिसिन की ऐड दे रहे हैं
तो आप उसको यूज़ करिए। बिफोर बताइए कि अगर ये कोई प्रोडक्ट है जो मैंने लिया है, तो आप ये दिखाइए कि इससे पहले मेरे एक्ने कैसे थे, मेरी स्किन कैसी थी, मेरी बाकी चीज़ें कैसी थी। आप वो चीज़ें दिखाइए कि उन चीज़ों के बाद उन चीज़ों का किस तरीके से यूज़ है, राइट? एंड साइड बाय साइड, these are the very key example I can say that प्रोडक्ट इन यूज, यूज ऑफ प्रोडक्ट, बिफोर एंड आफ्टर, साइड बाय साइड। ये चारों चीज़ों को अगर आप कोई भी ऐड को एक्सप्लेन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये चारों चीज़ें हमें दिखानी चाहिए एडवर्टीजमेंट में। अब वर्ल्ड लार्जेस्ट सेलिंग बाइक, अब आप इसके पीछे ताजमहल देख रहे हैं, सामने हीरो होंडा देख रहे हैं। इट्स अ वेरी क्लियर डिपिक्शन ऑफ द पर्सनालिटी फेवर एड कि अगर ये आप डिमांड देखिए लोगों की कि जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे, है ना, उतनी मतलब दीज आर दी वेरी ओवररेटेड एग्जांपल हीरो होंडा की। ये बहुत फास्टेस्ट बाइक है, ठीक है, ये बहुत लार्जेस्ट सेलिंग बाइक है, वेरी टूरिस्टी बाइक, मतलब हर घर में आपको ये बाइक ज़रूर मिलेगी, हीरो होंडा, है ना, देश की धड़कन इस तरीके से जो है। हीरो होंडा तो यही कहती है। स्प्लेंडर प्लस एक ये बहुत मिडिल क्लास बाइक है, एक बहुत ओवर यूज बाइक है, ओवर हाइप्ड बाइक है जो हर घर में है। शायद ये हम लोग यूज़ नहीं करते, जहाँ पर अगर हीरो होंडा इतना ज़्यादा इसको पॉपुलराइज नहीं करता तो। कंपैरिजन जो मैंने आपको पिछली एड में बताया था, लॉट ऑफ हाइप, अ लॉट ऑफ फ्लेवर, इट्स अ वेरी एग्जाम्पल। अगर आप कोई भी रेड मग देखते हैं कॉफी का, आपके दिमाग में कुछ नहीं आता सिवाय नेस्कैफे के। और कोई भी ग्रीन सिंबल देखते हैं, आपके दिमाग में कुछ नहीं आता सिवाय ब्रू के। तो दीज आर द एग्जाम्पल। पर यहाँ पर देखिए, वहां पर उसका नाम नहीं लिखा है, यहाँ पर उस प्रोडक्ट का नाम है, पर यहाँ पे उसका एक फेक सी इमेज दिखा दी गई है, एक कह लीजिए मिनिएचर टाइप्स ऑफ इमेज दिखा दी गई है, राइट? तो ये कंपैरिजन है ऐड की। अब हमने बताया था कि हमें प्रॉब्लम नहीं दिखानी, हमें प्रॉब्लम का सल्यूशन दिखाना है। तो हमने उसको किस तरीके से एडवर्टीजमेंट में दिया कि एफडीए अप्रूव्ड फैक्ट दिया है, एफडीए अप्रूव्ड हेयर लॉस सॉल्यूशन, वी ग्रो लास्ट ईयर, पहले ऐसा था, अब ऐसा है, और अब ऐसा है ना? तो ये किस तरीके से आप लोगों ने यूज किया वो है प्रॉब्लम अवॉइडेंस। हमें प्रॉब्लम नहीं दिखानी है, हमें उस प्रॉब्लम का नतीजा दिखाना है, उस प्रॉब्लम को अवॉइड करके अच्छा दिखाना है। So these are the very clear example. I always apply high suns protection to prevent skin darkening and dark spots. ये कई बार टेस्टिमोनियल एड्स में भी आ सकता है। Slice of life, which is a very emotional act, जिसे कह लीजिए इट्स अ वेरी ऑपरा फॉर्म ऑफ एक्ट। स्लाइस ऑफ लाइफ का बड़ा क्लियर मतलब होता है कि आपके जीवन का हिस्सा जिससे वो जुड़ा है। अगर कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐड करती है, तो वो ऐड में अगर जहाँ पे भी इमोशनल कनेक्ट है, वहाँ पर हम कहते हैं दिस इज अ स्लाइस ऑफ लाइफ, ये आपके जीवन का हिस्सा है। इफ आई एक्सप्लेन अबाउट द ड्रामा सीरीज, इट शुड बी लाइक, आप इसके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, इनसिक्योर एंड बी सिक्योर, है ना? ड्रामा है, यहाँ पे पूरी कहानी डिपिक्ट की है। स्टेन गॉन फर्स्ट टाइम, पहली वॉश में ही आपका स्टेन गॉन हो गया। तो ये सारी कहानी की गई है। इधर पे हीरोइन का यूज किया गया है, देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर एलिमेंट यूज किया है। ट्रस्ट पिंक, फॉरगेट स्टेन्स। कोई भी पिंक आप देखेंगे तो पिंक से आपके दिमाग में वैनिश ही आएगा। और हमेशा सिक्योर किसी भी पॉलिसी के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में LIC आएगी। तो ये सब बहुत ड्रामेटाइज किया गया है एडवर्टीजमेंट के लिए, एंड इट्स जस्टिफाइड बिकॉज किसी भी चीज़ को अगर आपको मार्केट करना है, किसी भी चीज़ को आपको सेल करना है, तो वहाँ पे ड्रामा बहुत ज़रूरी है। टीजर्स, लाइक अगर आप टाटा डोकोमो का ऐड देखेंगे तो वहाँ पर बहुत छोटे छोटे टीजर्स आते हैं। हेलो अनलिमिटेड, एंजॉय अनलिमिटेड लोकल कॉस्ट टू एनी नेटवर्क एट 66। यहाँ पर आप रणबीर कपूर के डिफरेंट फेजेस देख रहे हैं। ये बहुत क्लियर एग्जांपल है। इसमें कहा गया कि एनी नेटवर्क, आप कभी कॉफी पी रहे हैं, आप देख लीजिए रणबीर कपूर कहीं इमेज में है, कहीं हंस रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, कहीं पे शौक है, कहीं पे प्ले कर रहे हैं, कहीं पे इज लाइक मल्टीपल पर्सनालिटी इन मल्टीपल एरिया। तो ये है कि enjoy unlimited local calls to any network. These are network are the example of different people, right? तो यही वो सारी चीजें हैं, टीजर्स हैं। स्पोक्स पर्सन स्लैश एंडोर्सर्स, किसी भी चीज का अगर आप ऐड देते हैं, हेड एंड शोल्डर में पहले करीना कपूर एंडोर्समेंट किया करती थी,
तो उससे कि आप उन चीज़ों को ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि आपके दिमाग में है कि अगर करीना कपूर यूज़ करती है, बिकॉज़ वी आर इंडियंस, हमारे माइंडसेट में यही चीज़ें होती हैं कि हाँ, अगर करीना कपूर ये यूज़ कर रही है तो वी भी आई कैन आल्सो डेफिनिटली यूज़ दैट, राइट? तो उसका इम्पैक्ट शायद हर ऑडियंस पे नहीं पड़ेगा, पेड एडवर्टाइज़मेंट के तौर पे नहीं पड़ेगा, पर शायद कुछ लोगों पे ज़रूर इस चीज़ का पड़ेगा। और ये है पर्सनैलिटी सिंबल। अगर आप इसको देखेंगे या मतलब मैंने अपने जानबूझ से वो नाम नहीं डाले हैं। ये ऐड अगर आप देखते हैं तो पिल्सबेरी का आटे का एडवर्टीजमेंट है ना? और अगर आप ये पिक्चर को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्लियर होता है दैट मिडिल पिक्चर आर फ्रॉम ट्रॉपिकाना। मालब्रो है, ये एक बहुत पुराना कैरेक्टर है जिसकी एक टबैको के लिए एडवर्टीजमेंट होती है। अब मैंने एग्जांपल दिया प्रोडक्ट एज अ स्टार, व्हिच मींस दैट हमारी लाइफ में स्टार का मतलब होता है ऑन द टॉप, राइट? ऑन द टॉप, इट्स जस्ट ऑन द टॉप। तो कोलगेट मैक्स फ्रेश breathe strips like you feel something like you are on the star। तो इसमें स्टार्स के एलिमेंट्स बहुत यूज किए हैं, कोलगेट ने अपने प्रोडक्ट में स्टार्स को बहुत यूज किया है। सो दे want to show their product in the in a million way, in a million way, right? विंजिट जो आपको मैंने पहले ही बताया था, समथिंग डिटेल्ड, ओवरलैप्ड, ओल्डेस्ट, सब कुछ उस डिटेल्ड एड के अंदर है। तो दीज आर दिस फॉर्म ऑफ एड। टेस्टिमोनियल, आप अगर देखते होंगे कि किसी भी एड एग्जांपल देखिए, वीएलसीसी है, वीएलसीसी में फीमेल इज टेलिंग दैट आई लॉस्ट 21 kg at VLCC 10 months later and I'm still maintaining my new look। So it's her feedback, so it's just a very clear thoughts that yeah, this are the testimonial, people are using it and they have made the right decision to opt that product, right? Lifestyle, lifestyle means that वहां पर आप मोस्टली ऐसी एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे, ऐसे लोग दिखाएंगे जो आपसे मिलते जुलते हो, जिन्होंने अपने आप को वैसा लाइफस्टाइल बना लिया है यूज करने के लिए, राइट? म्यूजिकल, म्यूजिकल अगर आप देखते हैं, नेस्कैफे स्विच ऑन डेस्टिनी, व्हाट काइंड ऑफ नेबर आर यू। एक एड बहुत पुरानी थी जहाँ पे दीपिका पादुकोण अपने रूम पे कॉफी स्टर कर रही है, उधर पे कोई और दे आर सिंगिंग एंड दे आर हैविंग कॉफी, right? Obviously, coffee is somehow different from chai, right? तो coffee is very westernized word और मोस्टली इसको रेडियो के साथ काफ़ी ज़्यादा जोड़ा जाता है क्योंकि सुबह की शुरुआत जो हम करते हैं या तो हम चाय से करेंगे या तो हम कॉफ़ी से करेंगे। और कॉफ़ी जो है वो लाइक कॉफ़ी इज समथिंग विच इज़ वेरी वेस्टर्नाइज, विच इज़ वेरी प्री कॉलोनियल। कुछ ऐसी सी ड्रिंक है जो पहले भी लोग यूज करते हैं, अब और भी मात्रा में लोग यूज करने लगे हैं। तो ये थोड़ा म्यूजिकल फॉर्मेशन में ये एड को हमेशा जाना जाता है। फेविकोल को, इसी को देखकर फेविकोल ने अडेप्ट किया अपना म्यूजिकल फॉर्म, लोग उसको काफी इंटरेस्ट से सुनते हैं। इमेज ऑफ अ यूजर, very clear example that is the fastest Indian new Pulsar 220 DTSI, राइट? पल्सर कोई भी यूज करेगा तो वो फास्टेस्ट इंडियन होगा, वो फास्टेस्ट सिटीजन होगा। तो ये एक आपका यूजर का इमेज बना देता है। अगर आप और मैट्रिक्स के शैम्पू यूज करते हैं तो इट क्लियरली मीन्स दैट आपने अपने कोई बालों में केमिकल ट्रीटमेंट करा रखा है। अगर आप कह लीजिए कोई ऐसा शैम्पू यूज करती हैं जिसमें आपके बाल ही नहीं है, यानी इट क्लियरली मीन्स दैट आपको वो ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसके भी बाल नहीं थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को देखकर आप अपनाने लगते हैं और आप भी वैसे ही बन जाते हैं, राइट? अगर मैं कोई फेयर एंड लवली लगाती हूँ तो मतलब मेरे को क्लियरली पता है कि मेरी स्किन बहुत अच्छी है। साइंटिफिक एविडेंस, हाउ प्योर इज योर प्योरिफाइड वाटर, इसमें साइंस के भी एविडेंस दिए गए हैं कि इसमें कितने कितने जर्म्स हटते हैं और इसमें कितने आरओ प्योरीफायर है, इसमें कितनी प्योरिफिकेशन के स्टेजेस हैं, ये सारी चीज़ें। तो दिस इज अ साइंटिफिक एविडेंस एग्जाम्पल। While writing your ad, your message tone would be happy. If the ad is happy, then your tone would be happy also. If the ad is fearful, that it should be like avoidance, then your fearful tone would be there. If something is excited going to be happen, then your tone would be excited. If something funny would be happening, then your tone would be funny. Serious, for serious advertisement, your tone would be serious. Proactive, anonymous, advisory, vulgar. These are not the tone which you will be using for the advertisement, not for voiceover only, but also for the writing process. It's not depend upon that message tone is always for the audio, right? It's also for the writing skills. Message structure. The message would be verbal, also non-verbal, right? It should be readability, ordering effect, primacy, recency. No repetition would be allowed.
It should be not counter arguing, it should be arguing celebrity support. Readability is most important in advertisement. If the sentence is long, then nobody will be. Not at all. Number of ideas in a single message. Ad can't be long though. It should be number of ideas into a very single message. Arrangement of words would be there. Word frequency would be required. Font size would matter. Grammar can't be improper. Use of slang can't be there. Use of jargon can't be there. So then, in after avoiding of these ugliest thing, then only the readability of the ad can be used. Ordering effect. Primary advisor argument. First, recency, advertiser has the last word. Primacy means the people who are telling that मैंने तो कभी यूज नहीं किया, and recency would be एक बार यूज करके तो देखिए आप खुद ही जान जाएंगे. These are something ordering effect, right? जैसे कि आप विम बार का यहाँ पर ऐड देखिए जले हुए बर्तन और जब धोए तो कैसे हुए, है ना? ये मानने को नहीं तैयार थी, उसके बाद उन्होंने धोकर दिखाए. These are ordering effect. Benefits of celebrity advertising. You can say that it's a very commonly used advertising method in the country like India. Advantage like familiarity, credibility, differentiation, relevance. The advantages of celebrity advertising, people are very familiar to them. If you're watching the ad of Amitabh Bachchan, people will connect very clearly. Credibility. If that actor has that credibility, it definitely occurs that the credibility of that product would be also there. Differentiation would be there and relevance, authenticness would be there. If I talk about disadvantages about the ad, so it should have a very short life cycle, not that press. The product would be expensive though. Price policy, celebrity tantrums, multiple endorsement. कई बार कोई लॉरियल का करीना कपूर यहाँ पे भी दे रही होती हैं और वो सेम वीको के में भी दे रही होती हैं. These are multiple endorsement would also impact it. Lack of credibility. अगर कोई एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को endorse करेगा तो credibility रहेगी नहीं. Shifting loyalties. Loyalty भी बहुत असर पड़ेगा in vampiring. Example, tips to prepare a good ad and a conclusive ad. If you are endorsing a celebrity, then catch them young because it should be more impactful. Ensure sustainable trust. Like you need to sustain that person in that particular ad. If Amitabh Bachchan is giving the ad of Dabur Glucose Tea, till now he's also giving this Dabur Glucose Tea ad. So it means that he has sustainable value. Choose wisely if you are endorsing any person. You need to have that thought in your mind that if you are using that people in your ad, that you need to choose wisely. Choose the right celeb. If you are choosing the any right celebrity, it will impact you. And before ending my PowerPoint presentation, if any of you have any questions, I hope that somehow the PPT will work for you in general. So, if while processing through this all PPT, if you have any question, any doubt, any thought which came up while watching this video, you can drop a comment in that particular video in the end of the video section. And I also sharing my email ID with you. If you have any queries regarding any topic related with advertisement, related with media, you can also drop that, right? So signing off from the video. I hope that you have very clear thought about that, what actually advertisement means, what actually you like through how you can write your advertisement, what are the ideas behind the advertisement. So thank you so much. Here's Archana Singh signing off from this video. Thank you so much and keep learning, keep discovering yourself more, and till we meet again. Thank you so much.